great philanthropist, deeply inspired by religion, by his religion. Namely, he was a Shia Muslim, a Bohra Shia Muslim, deeply inspired by his religion. He gave away almost all his wealth for orphans, for poor, whenever people face disasters, he would provide relief to disaster affected people. There were, he ran a number of schools, 4,000 students studied on those schools, and from over 100 years, those schools are continuing, orphanages are continuing. He set aside his wealth for all this great philanthropic work. In this great philanthropic work, his idea was not charity. He worked with empathy for people who needed. He was serving not only the poor and the needy, he was serving God along with the concept of, in Hinduism there is concept of Daridra Narayana, service of poor is service of God. In Islam there is a similar concept, and so with that inspiration he worked. I think people like Sir Adamjee Peerbhoy, philanthropists from other religions, all other religions, have contributed towards a peaceful Mumbai, and the way we see Mumbai and Bombay at that time was constructed by not only the city management, by the government, but also great philanthropists like Sir Adamjee. भाई से सबसे बड़ी बात जो सीखते हैं वो ये कि जीवन केवल खुद के स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। हम समाज का भाग हैं और समाज की बेहतरी के लिए जो भी कर सकें, जिस भी रूप में कर सकें वो करना चाहिए। तो जैसे ये फिलंथ्रॉपिस्ट ये थे, उन्होंने इतना बहुत महत्वपूर्ण काम किया। सैनिटोरियम का देखिए, जो अभी कोविड के समय भी हॉस्पिटल के रूप में हॉस्पिटल्स आए, तो ये खुद के पैसे को खुद का न समझ के या उसका खुद का उपयोग के साथ साथ समाज की बेहतरी कैसे हो सकती है, वो उन्होंने जो किया, मेरे ख्याल से वो अद्वितीय है, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार का कल्चर उन्होंने इस शहर में डाला, उस कल्चर के कारण यहाँ अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग संस्कृतियों के लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहे। मैं मानता हूँ कि आदमजी पीर भाई और उनके जैसे लोगों ने जिस प्रकार की बॉम्बे की नींव रखी, ये उसी कारण है कि बॉम्बे इतना एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बन सका। उसमें खैर कुछ बहुत ख़राब चीज़ें हुई हैं, और उसके बावजूद उस शहर की जो एक एकता है, विविधता में एकता, वो उसको दर्शाती है। और ये भी हमें सिखाती है कि जैसे आदमजी पीर भाई ने शहर के विकास के लिए किया, समाज की समस्याओं के लिए किया, हमने अपने जीवन में आगे ऐसा करना चाहिए कि हमारा समाज उससे बेहतर बन सके। पीरभॉय जो थे, आदमजी पीरभॉय, एक बहुत ही रिनॉन नेम, एक आइकॉन। इनके बारे में तो हम सुनते आ रहे थे, बट कुछ कपल ऑफ ईयर्स से मैं हुसैन भाई के राब्ते में हूँ, और वही एक उनकी लेगेसी का मैं इनका तरीका देख रहा हूँ बात करने का, और सेम जो आ रहा है कि उनका जो विजन था, उनका जो फिलॉन्थ्रफी की तरफ ध्यान था, जैसा इन्होंने भी फाउंडेशन एक बनाया, तो सेम इट्स इन द डीएनए, इट्स द ब्लड। और ये ऐसा नहीं होता है आदमी अपने, वी हैव टू डू इट। एक तो थुकम की तासीर और एक सोबत का असर, तो इनको वो भी था, डीएनए में भी था, और इन्होंने एक चूज़ किया कि नहीं, मेरे को भी ये लेगेसी कंटिन्यू करने की। तो हैट्स ऑफ टू हिम। एंड जो आज हम लोग इधर आए इनके बुक की ओपनिंग में, मैं इनसे खाली एक ही रिक्वेस्ट किया हूँ कि ये इंसान से हमारे को एक ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म मिला है, सर आदमजी पीरभॉय से एक फिलैंथ्रोपी का उनका मिला है, एंटरप्रेन्योरशिप का मिला है, एक उनका विजन देखने मिला है। तो ये जो जितना भी ज़्यादा अवेयरनेस कर सके और आज के जनरेशन को बता सके, तो और भी कई आदमजी बन सकते हैं। ये बहुत ही लॉन्ग अवेटेड हमारी फैमिली की सबकी विश है कि सर आदमजी पीरभॉय का नाम फिर से जागरूक होना चाहिए। जो काम उन्होंने किया है, जो
जिस वक्त फिलेंथ्रोपी का मकसद भी नहीं पता था, किसी को नाम भी नहीं पता व्हाट इज़ फिलेंथ्रोपी, उस वक्त उन्होंने किया। और आज हम लोग को बुरा लगता है कि उनके नाम का बॉम्बे में कहीं पर कुछ भी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट मैंने एक बार पहले गवर्नमेंट से लिखा भी था 2007 में कि उनके नाम से एक पोस्टल स्टैम्प इश्यू होनी चाहिए। तो उनके नाम से तो नहीं हुई, लेकिन माथेरन ट्रेन की इंजन के ऊपर एक फ़ोटो आया, जो हमारी इंजन थी जिसको हम लोगों ने जर्मन से लाए थे, वो इंजन का फ़ोटो के साथ में एक पोस्टल स्टैम्प बना था। अभी मेरा फ़ॉलोअप ऐसा है माथेरान, मैं इनके साथ में कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के साथ में करना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं इनके नाम को कोई ना कोई रास्ते को किसी को इनका नाम देना चाहिए। मेरे पास एक चीज़ है कि जो पीरभॉय पैलेस जो था, जो इनका 20 साल की उम्र में उन्होंने जो बनाया था, और 20 साल की उम्र में मलबार हिल के ऊपर अपने खुद के खर्चे से पूरा पीरभॉय पैलेस एस्टैब्लिश करना, इट्स अ बिग थिंग, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। वहाँ पर एक ग्रैहम बेल के नाम का रोड बना हुआ है, और ऑफ कोर्स मिस्टर ग्रैहम बेल तो बहुत बड़ी हस्ती है और ये होना चाहिए। लेकिन जैसे हमारे सब फॉरेन में ब्रिटिश के नाम जा रहे हैं और कहीं पर आ रहा है, तो वो है, या फिर साइन धारावी के ऊपर जो लार्जेस्ट टैनरी थी हमारी इन द होल ऑफ एशिया, तो अभी जैसे साइन धारावी का जो टी जंक्शन है, इट इज़ नॉर्मली नोन एज टी जंक्शन बिकॉज रास्ते दो क्रॉस होते हैं, तो उसको नाम दे सकते हैं सर आदमजी पीरभाई चौक या सादमजी पीरभाई जंक्शन पे भी। ये एक रिक्वेस्ट रहेगी हमारी गवर्नमेंट से, और मैं चाहूँगा कि मीडिया के ज़रिए से ये बात थोड़ी ज़्यादा फैले। मुझे लगता है सार तत्व जो है इंसानियत के लिए प्रेम, और दूसरों के लिए, वो आपके रिश्तेदार हों या ना हों, आपके कौम के हों या किसी और कौम के हों, उनके लिए भलाई करना और उनकी तरक्की के लिए ऐसे काम करना कि सभी जो हैं आगे बढ़ सकें और अपने भी ज़िंदगी में इंसानियत के भावनाओं को व्यक्त कर सकें। मुझे लगता है वही मेन लेगेसी। थैंक यू। Oh, I think the fact that he had this vision and he was able to put his resources, his energies, and his passion to be able to put that out and to create so many amazing structures, one of which is the Mathiran Railway, but there are several others. And he was able to get people together to be able to do this. That is a huge achievement. It's extraordinary. It may seem like it's absolutely extraordinary for today's youth, but with small beginnings, as he has shown us, as the book tells us, very, very humble beginnings, he has been able to do so much that we can still remember him. The other thing that I would really like to stress is that, which I said earlier, is that there is an erasure, and there is a very unfortunate erasure of the legacies of people like Sir Adamjee Peerbhoy, and that erasure should not be allowed. So today's youth really have a responsibility, I think, to take that forward and to seek out these kind of histories very actively, the histories that they're not getting from their textbooks or the histories that they're not getting because it's just not available to them. To really seek these out because they need to know and they need to learn. The government really needs to put together some kind of institutional way of remembering him. Mr. Hussain has already talked about some efforts that he has put together, but and he's also tried for. But this is really a responsibility for the city of Bombay. It's not just something that a family should put together because it's really something that is beyond just one family. And it's important that the city and the administrators of the city come forward with ideas, with other people who are interested, with the family, of course, and work out a way in which that legacy becomes a living heritage. It's not important, I mean, it's not necessary to have these dead heritages. We need to make those heritages alive.